Assalamu alaikum students. We are here with our lecture series. You know that for this to inform our civil service aspirants as well as to JKSSB aspirants that we have started a series, free lecture series on our YouTube channel, that's Suhail Speaks C.S. And before I give you some more information about that, I would like you to please go through those videos which we have already uploaded. If you find the content enriching for you, if you find the content very viable for you for your examination, please do subscribe our channel, spread the word, press the bell icon. It can help us, it can motivate us, and motivation can play a lot better role. You know that already. And that lecture series we have so far started with two main core subjects. One is history, other subject is economics, and we are studying completely in context with the demand, with the need of the examination. You don't have to rely on any other channel after reaching, that is our promise, after watching our videos, because we try to cover things very comprehensively, taking on to board various standard textbooks. Since I have myself qualified mains in optional history, so keeping the need of examination in my mind, I have used books, very standard books, for reference, to update, to make your material very comprehensive for your examination. And in continuation in that series, we are today going with our first lecture. No, not a first lecture really. I'm saying since we do two shifts daily, but today the first shift is dedicated to part in history. When we are left in last history lecture, we studied about the political administrative structure of Delhi Sultanate, but we did not mention about the local administrations of Delhi Sultanate. Today we'll begin from there. Then afterwards we'll try to cover economic aspects of Delhi Sultanate. But today we'll be much more focused, and we'll be completely focusing on our lecture in and around this local administration, and we'll see how far the lecture proceeds, and similarly we'll be doing other things as well. So without wasting time, let us start our lecture. This is local administration of Delhi Sultanate. Often asked as a question in UPSC, they give those that order either in degree. They often try to ask a question about local administration, giving various units of administration, telling us to arrange either in ascending order or descending order. And if there is some importance in these administrative units, often it checks our comprehension in that regard. Now let's start. Local administration of Delhi Sultanate. As we know, that empire was very vast, and it was too difficult to control, to make an administration completely centralized. But we also know this, that we have a notion of Delhi sultans being highly centralized. That's true, but that does not mean they had no evidences. There were no evidences of local administration present in the Delhi Sultanate. That would be completely wrong. We'll have to focus, we'll have to see what kind of units were there, and we'll have to arrange those units in a descending order and try to ascertain the importance of each and every unit in that regard. Come on. This was an empire. Earlier, this empire was divided into various iqtas.
which later on turned into provinces. पहले इनको क्या कहा जाता था? इक्ताज. बाद में इनको क्या नाम दिया गया? प्रोविंसेस. बाद में यही इक्ताज क्या बन गए? प्रोविंसेस. और हमें रेफरेंस मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त कि ऑलमोस्ट देयर वर 24 provinces or present during in the Delhi Sultanate during the reign of Muhammad bin Tughlaq. ठीक. जब इक्ताज की हम पहले जिक्र करें, we have a phase before Alauddin Khilji and we have a phase after Alauddin Khilji, and we know this fact that Iqta system was not it was started during the time of Iltutmish, and we have a reference of the system in Central Asia as well. This was not a completely innovation of Delhi Sultans. No, we have already reference there. But in India, the system was started by Delhi Sultans. What in this system, what they used to do, we have already said this in our previous lectures. The empire was parceled into various land revenue tracts. See, if we can visualize this via figure, अगर हम figure, अगर हम empire की बात करें, अगर ये empire है, तो इसको land revenue tracts में carve किया गया. ठीक, ऐसे. Though some part was खालिसा land, अगर हम उसी को जो डायरेक्टली अंडर सुल्तान था, अगर हम इसको खालिसा लैंड माने तो ये बाकी हम इक्ता कह सकते हैं. ठीक, ये भी इक्ता, ये भी. और जो हेड करता था इन इक्ताज को, उसको कहते थे मुक्ति. क्या कहते थे? मुक्ति और वली. या तो मुक्ति का अगर आपको बोलेगा द हेड ऑफ दिस इक्ता वाज वली, आपको मुक्ति कहीं नहीं दिखा, तो आप ये मान के, आप प्लीज गलत ना मान के चलना वहाँ कि वली इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. वली इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मुक्ति was the same person who used to be वली. मीन्स टर्मिनोलॉजी में कुछ और फर्क है, मगर ये दोनों सेम है. ठीक. पहले ये जो मुक्तीज हुआ करते थे, ये ज़्यादातर कंट्रोल में नहीं थे बिफोर द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. तो इनको बोला जाता था कि आप लैंड रेवेन्यू देख लीजिए लैंड का, और स्टेट को इस लैंड रेवेन्यू में से अपना हिस्सा दे दीजिए. वो मीन्स इनके पास दो काम हुआ करते थे इन मुक्तीज के पास. वन वॉज, देखो ये यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मेहरबानी करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए. उन्होंने कंपैरिजन इससे पहले पूछा है जागीरदारी, मनसबदारी और मुक्तीज का, तो आगे भी किसी और सवाल को तोड़ मरोड़ कर आगे पूछा जा सकता है. तो इसलिए ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक. एक तो था इनका फंक्शन, दैट वाज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. और दूसरा क्या था? लॉ एंड ऑर्डर. ठीक. ये लैंड रेवेन्यू, अब इसमें से आधा हिस्सा ये स्टेट को देता था, जितना भी उसको देना पड़ता था. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच. ठीक. आधा एक खुद के लिए रखता था, ओन सेल्फ. आधे ये जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो रिक्रूट करते थे, आधे उनकी इसके लिए रखता था. ठीक है, फॉर
सोल्जर्स, उनकी सैलरीज, उनके खर्चात, उसमें मैनेज करता था, ठीक। और लॉ एंड ऑर्डर तो आपको पता है, क्योंकि सोल्जर्स चाहिए थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो उस रेवेन्यू से। अब आपके पास यहाँ सवाल है जो मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपके लिए ये सवाल है, द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, वर दीज मुक्तीज लिविंग इन दोज रेवेन्यू दिस विलेज और रेवेन्यू ट्रैक्ट्स, क्या ये खुद वहाँ रहने जाते थे या उनको खुद रहना पड़ता था कि ये कहीं और से भी। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसका जिक्र किया है। आई एम ओनली सीइंग कि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं देख रहा हूँ कि आप फुली कंसंट्रेट करते हैं पुराने लेक्चर्स में कि नहीं है। तो मैंने इस बात का जिक्र किया है पुराने लेक्चर्स में, तो आज आप एक बार और देख लेंगे कि इनको वहाँ रहना पड़ता था खुद की नहीं, कि ये किसी और को वहाँ डिप्लॉय करते थे, ठीक। कल आप मुझे इसका आंसर या कमेंट्स में लिख सकते थे, या मुझे जो फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है वो मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इस वक्त इनको खास ऑडिटिंग नहीं हुआ करती थी। वी नो डेट अलाउद्दीन खिलजी से पहले बड़े चाव भाव में ये रहते थे, मगर अलाउद्दीन खिलजी के वक्त उन्होंने इनको कंट्रोल करना सिखाया, बहुत ही कंट्रोल, बिकॉज he started paying soldiers in cash himself. Obviously इन मुक्तीज को भी फिर कैश दिया गया, इन मुक्तीज को भी उनकी एक्चुअल इनकम को एसरटेन किया गया, उनकी सैलरीज को फिक्स किया गया, उनकी सैलरीज को फिक्स किया गया। को मीन्स अगर वो मिलिट्री को अब जो वो भी रेवेन्यू लेते थे उन रेवेन्यू ट्रैक्ट से, अब उनको स्टेट को देना पड़ता था। पहले इनको वो रेवेन्यू ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी के वक्त क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, बिकॉज यहाँ आप क्वेश्चन को आंसर सही से दे सकते हो। पहले इनको रेवेन्यू ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, ये या खुद वहाँ रहते थे या किसी को वहाँ डिप्लॉय करते थे उन चीज़ों के लिए, अपना काम कराने के लिए। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे शिकंजा कसा, means he started controlling them. When he started controlling them, he started to ascertain their revenue. उस रेवेन्यू को देखा कि कितना रेवेन्यू इनको आ रहा है। साथ ही में सोल्जर्स को भी कैश ना, उसने सैलरी देना कैश में स्टार्ट किया। इन मुक्तीज को भी सैलरीज फिक्स की गई, means it was not necessary for them now to stay in those tracts, ठीक। और उसने क्या किया, और इनको बोला गया कि आप स्टेट को they had to remit to center the balance after meeting expenditure. अब जो भी वो एक्सपेंडिचर उनका हुआ करता था, they had to remit all that balance to state, ठीक है। इससे पहले एक तो स्टेट का ड्यू जो हुआ करता था वो उसको देता था, और खुद सोल्जर्स मेंटेन करता था, ठीक है। और उन सब अब उसको देखना था कि मेरा खर्चा क्या आएगा, उसके बाद सारा किसको देना था, स्टेट को, बिकॉज स्टेट इटसेल्फ पेड सोल्जर्स इन कैश एंड दे आल्सो पेड दीज मुक्ति, दे आल्सो फिक्स द सैलरीज ऑफ दीज मुक्तीज, ठीक। फिर फिरोज शाह तुगलक के वक्त आपको पता ही है, इन मुक्तीज इस सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया गया, जो एक वन ऑफ द मेन रीजन फिर डिक्लाइन कर रहा है। तो फिलहाल आप मुझे इस पे बारे में कल ये बताएंगे कि मुक्तीज, और जो अभी आप सिर्फ मुक्तीज के बारे में मुझे बताएंगे, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आप मुझे देंगे। फिर जब हम मुगल्स में जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम देखेंगे, वहाँ हम थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे, क्या मेन डिफरेंस थी, ठीक। अब प्रोविंसेस तो बन गए, प्रोविंसेस के बाद हमने अब जो इसके बाद छोटे छोटे यूनिट्स थे, इसके बाद वो था शिक, प्रोविंसेस को छोटे यूनिट्स में इट वाज लाइक डिवीजन्स, तो उसको प्रोविंस को वेरियस डिवीजन्स में बनाया गया, इट वाज लाइक डिवीजन्स, और उस डिवीजन को क्या कह सकते हैं हम, शिक।
اور شک کو ویریس پرگناز میں شک کو پرگناز میں ڈیوائڈ کیا گیا. Though we have not sufficient information about the village administration of Delhi Sultanate because most of the focus remained towards the court, but that does not mean we do not have to study about their local administration. That's not true. We have to study about that. تو پرگناز اور پھر ہم نے اس کو اگر آپ سیدھے کہیں گے تو آپ بولیں گے کہ اس کے بعد ولیجز ہوا کرتے تھے, مگر ولیجز کو ہم گروپ کرتے تھے ادھر ان ہنڈرنڈس اور ان 84, تو اس لیے اس کو بولتے تھے 100 یا 84. تو ان کو گروپ کرتے تھے ڈفرینٹ ولیجز. اس کے بعد اوبویسلی ولیجز تھا, ٹھیک, مگر ولیجز کو ہم گروپ کرتے تھے 84 یونٹس میں اور یا 100 یونٹس میں, ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو کہیں پہ دکھے گا 84, وہ کچھ نہیں ہے, ہم وہ ولیج ایک لوور یونٹ تھا, ہم گروپنگ کرتے تھے ان ولیجز کی یا 84 نمبر میں, مگر وہ بلو, جب بھی آپ دیکھیں گے وہ بلو پرگناز ہوا کرتے تھے. پرگنا واز بگر یونٹ دین ولیج اینڈ شک واز بگر یونٹ دین پرگنا, اینڈ دس مکتی دس اکتا اور پروونس واز بگر یونٹ دین شک, ٹھیک. یہ یہاں اور کچھ آفیشلس جو یہاں امپورٹنٹ تھے ان کا ہم تھوڑا بہت ذکر کریں گے. اگر ہم پرگنا کی ذکر کریں گے, اس میں جو مین آفیشل تھا دیٹ واز عامل. آفیسر انچارج کون تھا, اس کو کیا بولتے تھے, عامل. یہاں تو آپ کو پتا ہے مفتی اور ولی. شک پہ جو مین تھا شک کا دیٹ واز شکدار, اور شکا شکدار واز شکدار. اور ولیجز میں 2 کلاس آف پیپل ویری امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے. ون واز خود اینڈ ادر واز مقدم. اینڈ پٹواری. کیا خیال ہے؟ خود تھا لینڈ اونر, اسمال لینڈ اونر. لینڈ اسمال مینز شیئر کراپر سے زیادہ, خود ہوا کرتا تھا لینڈ اونر. تو اسمال. مقدم کون تھا؟ مقدم دیٹ واز ولیج ہیڈ مین as well as landowner. اور پٹواری کون تھا یہاں؟ اٹ واز ولیج اکاؤنٹنٹ, ٹھیک. یہ آپ نوٹ کر دیجیے, اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو پلیز. دس کین کم ایز اے کویشچن. They have asked about Mughals, now they can ask about Delhi Sultan. They have asked about Cholas, now they can ask about Delhi Sultanate. تو یہ آپ یاد کر دیجیے پلیز, دس از ویری امپورٹنٹ فار یو. کسی بھی چیز کو لائٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو نیور نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو تھرو ایٹ یو. دے آر گوئنگ ٹو آسک اینی تھنگ دیٹس ان یور سلیبس. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ.
ठीक है. This was all about local administration of Delhi Sultanate. So far, till today, we have completed about this provincial administration. We have read about central administration, various departments, various officials present in that administration. Please keep note of those notes वो को पूरी तरह से रिवाइज कीजिए और इसको भी आप पढ़ लीजिएगा. इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा. Believe me, these type of questions are asked, they can be asked in your examination. Now, we'll have a slight introduction about the economic system. We'll be not dealing in a complete detail today about economic system, but we'll have a little in this structure. I'll ask you please go through that structure. उससे आपका ये easy होगा ताकि आप घर में पढ़ के आए और फिर जब आप पढ़ के आएंगे उससे आपका फायदा होगा. ठीक है. इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करेंगे इनकी, हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे. कल जब मैं इस लेक्चर में बात करूंगा इकोनॉमिक सिस्टम पे, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, इट वुड बी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इकोनॉमिक सिस्टम. यहाँ आपको हमें पूरी तरह से पता है कि दिल्ली सल्तनत जो इकोनॉमी थी, इट वाज प्राइमरली एन अर्बन इकोनॉमी. यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन फुल डिटेल टुमारो. तो यहाँ पे याद रखेंगे इट वाज अर्बन इकोनॉमी. अर्बन इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए इम्पोर्टेंस किस चीज़ का रहता है? रूरल इकोनॉमी. मीन्स इट वुड हैव ए वेरी एक प्रॉपर एक्सचेंज इंटरचेंज सिस्टम होता होगा रूरल पर. ब्रिस्क अर्बन रूरल एक्सचेंज प्रेजेंस होती इस सिस्टम में. ओब्वियसली जब अर्बन इकोनॉमी तो अर्बन डेवलपमेंट हो जाती. अर्बन डेवलपमेंट इतनी इजी तरीके से नहीं होती. देयर हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड. अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जब तक कोई इन्वेंशन या कोई और चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की गई सिस्टम में, तब तक इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हमारे पास नहीं होता. मीन्स देयर माइट हैव बीन सम इंट्रोडक्शंस इन द territory of India by these Turk people, by these Turkish people, by these sultans. तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की और उससे हमारा क्या फ़ायदा हो गया, उसमें अर्बन इकोनॉमी का क्या फ़ायदा हो गया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समथिंग व्हेन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ लार्ज स्केल इम्पैक्ट इन एन ओवरऑल सिस्टम. तो उस सिस्टम में बहुत सारा इम्पैक्ट हो गया. डिफरेंट कैरेक्टर्स, हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे देखेंगे. क्या हो गया नया, क्या चीज़ें हमारे पास जो मौजूद नहीं थी, तो जब वो इंट्रोड्यूस हो गई उससे क्या फ़ायदा हो गया. दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर इन टुमारोज लेक्चर. सिंस अगर मैं आज इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाऊँगा, दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक सिस्टम. तो ये मैच नहीं खा पाएंगे. तो चूँकि ये मैच नहीं खा पाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इकोनॉमिक सिस्टम completely. I want to make you understand that in completely different lecture, ताकि आपको पूरा फोकस उस इकोनॉमिक सिस्टम पे उस दिन रहे, because that will demand almost 40 to 50 minutes और हमारे पास वो 40 to 50 minutes मौजूद नहीं है. तो with this I'll conclude lecture for today. Thank you so much. Allah Hafiz.